हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग एम एन श्रीनिवास को इंडियन थिंकर में शुरू किए थे और आज हम लोग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर जिसको आप जानते होंगे, राधा कमल मुखर्जी, जो आपकी यूजीसी के भी सिलेबस में और काफ़ी सारे बीए और एमए सिलेबस में भी इसको पढ़ाया जाता है। राधा कमल मुखर्जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिस्ट। जब हम लखनऊ स्कूल का सोशोलॉजी की बात करते हैं तो राधा कमल मुखर्जी की बात आती है। He was the founder of Department of Sociology, University of Lucknow। और इनकी उस समय जिस समय समाज को समझना और पहचानने की जो तरीका था, that was completely different. Basically, he was from West Bengal, but he worked at Lucknow University for a long period of time. और उनकी जो अप्रोच था इंटर डिसिप्लिनरी और डिफरेंट डिसिप्लिन्स को साथ लेके, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, फिलोसफी, ये सारे चीज़ों को इन्होंने अपने स्टडी के माध्यम से, अपने अप्रोचेस के माध्यम से ही वांटेड टू क्लैरिफाई दैट एनी सोशल साइंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव मेथड्स। दैट इज़ वन ऑफ द वे राधा कमल मुखर्जी की जो साइंटिफिक स्टडी है, जो इंडियन सोसाइटी की या रेस और कास्ट की जो ओरिजिन के बारे में वो डिफाइन करते हैं, दैट एक्सप्लेन्स दैट हाउ द कंपैरेटिव मेथड्स इज वन ऑफ द साइंटिफिक वे राधा कमल वांटेड टू स्टडी। Radha Kamal Mukherjee, if you want to understand the best contribution of Radha Kamal Mukherjee, then it is obviously social ecology। इस सोशल इकोलॉजी को हम मुखर्जी के साथ जिस समय उन्होंने बताया था, वो टुडे आल्सो इट इज वेरी मच रेलिवेंट इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज। और इवन आज भी हम लोग जब भी इकोलॉजी या सोसाइटी को डिफाइन करते हैं तो जरूर राधा कमल मुखर्जी को याद करते हैं और उनकी एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। When he talks about social ecology, that how the social sciences has a relationship with the interactions with geological, geographical and biological factors। तो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, it is not about only the environment factors, it is not only the geographical factors, but it has a relationship with geology, biology, geographical with respect to the society। तो ये जो इकोलॉजिकल जोन को बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी, that gives a wider understanding of the society, that how we are not, the human being is not separated from geological, geographical and biological aspects that is part of our society। Ecology, it is not only about the idea of geography or geology or biology, but it has a relationship with social, economic or political factors। That is Radha Kamal Mukherjee's one of the best way to understand that whenever we study ecology, so usually the scientist or the environmentalist, they think it is only about the geographical or geological aspect, but it is very much close to the social, economic and political factors। So that means जब भी हम इंडियन इकोलॉजिकल की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, so it has a relationship with how the human settlement and agrarian development has helped in Indian context with respect to the political conditions of different aspect। For example, during colonial period, how the human settlement and agrarian systems, post-colonial period, how there is a change in human settlement as well as agrarian structure। So all this has a relationship with the social, economic and political factors of that time। Then how do you understand the link between ecology and society? जब इकोलॉजी की बात करते हैं और समाज, ये दोनों के बीच में जब रिलेशंस की बात करते हैं, इट इज स्पेसिफिकली डायनामिक प्रोसेस, इट इज नॉट ए स्टैटिक। क्यों डायनामिक या परिवर्तित प्रक्रिया क्यों है? बिकॉज इट हैज ए रिलेशनशिप विथ द ह्यूमन कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड ऑल्सो द रिलेशंस टू different political, social, cultural environment। So that means that how the environment and its responsible people who establish any human settlement, it has a relationship with that, why social ecology became important aspect। When we understand the ecological balance from the idea of Radha Kamal Mukherjee, then you understand that how the idea of the territory which has a relationship with human settlement and human being has a relationship with to change that setup
ecological setup and create one and another way of social life. So that means human being has that capacity, that skill to change the ecological conditions to create a human sustainable settlement. So that gives an understanding that how the territories or the ecological concept is not separated from human being or human conditions. So according to Radha Kamal Mukherjee, social ecology is the better alternative to understand that how the rapid industrialization held because of the human being and human being settlement with respect to the economic and political structure of the society. जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण की बात करते हैं, it was not the ecology created by the nature. ये ह्यूमन बीइंग की एक क्रिएशंस है, ह्यूमन बीइंग की एक नीड है, एंड दिस नीड हैज a relationship with social and economic structure of the society. If you understand that how the idea of the values from the idea of Radha Kamal Mukherjee, then you find that Indian society from very beginning has a relationship with the development with respect to values. इसका मतलब जो मूल्य की बात करते हैं तो भारतीय समाज जो पारंपरिक समाज है उसमें हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं वैल्यू को हटा के नहीं बात करते हैं. So that means the idea of value has a relationship with the ecological sustainability, ecological goal, ecological balance. So इसका मतलब हमारे लिए डेवलपमेंट जितना इम्पोर्टेंट है बट उस डेवलपमेंट से जुड़े हुए ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है. एंड डेवलपमेंट हैज ए रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, society, or even it is economic or political aspect of the society. Then when you understand the idea of social ecology, Mukherjee also talks about the idea of regional sociology. क्योंकि जब हम रीजनल क्षेत्र की डिफरेंट एरिया के समाजशास्त्र की बात करते हैं, so they have their own way of understanding the development. तो डेवलपमेंट फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी, फ्रॉम रिमोट एरियाज, फ्रॉम रूरल एरियाज, डेवलपमेंट फ्रॉम एन अर्बन सेटअप, ये सारे जगह की सोशल इकोलॉजी इज कैनॉट बी होमोजेनस कैटेगरी. So that means different region has its own sociology, and that sociology is about the culture, the economy, the politics. It has a relationship with the understanding of the development. तो विकास की बात करते हैं तो विकास एक होमोजेनिटी प्रक्रिया नहीं है जिस प्रक्रिया को हर इलाका में हर क्षेत्र में बराबर तरीके से देखा जाए. इट इज ए रिलेशनशिप विद डिफरेंट सोशल इकोलॉजी दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स. तो यहाँ पे जब रीजन्स की बात करते हैं दैट if the regions in modern India were developed, then how it is also important to understand the people in the nation is there to understand the development. तो इसका मतलब nation एक larger goal हो सकता है, but the idea of ecology here is also important to understand the region where the development is possible. So that means the development cannot be held with the local human settlement, the local conditions, socio-economic conditions. That is also important to understand the larger aspect of the development. Then it is also clarified from the idea of Radha Kamal Mukherjee that how the human skills, it is also important to change the social ecology. तो ह्यूमन बीइंग के पास जो हमारे पास जितने भी कास्ट या डिफरेंट रिलीजन्स ये सारे चीज है, इससे हट के भी डेवलपमेंट को या समाज को देखने की ये जो स्किल है ये ह्यूमन बीइंग के पास है. सो दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, जब मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, सो दैट मीन्स वी आर ऑल्सो नॉट डिटैच्ड टू द ट्रेडिशनल सिस्टम्स. तो इसका मतलब जो सोशल इकोलॉजी है हमारे पास एक ट्रेडिशनल सोशल एस्पेक्ट है, उसको भी हम साथ लेके उस डेवलपमेंट को हम समझते हैं. इफ यू लुक एट द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को बात करते हैं, देन यू फाइंड दैट हाउ द ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम्स और द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बिकेम पार्ट ऑफ द मॉडर्न मार्केट. तो आपके पास जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स था वो मॉडर्न मार्केट के साथ भी जुड़ा हुआ है. सो दैट एक्सप्लेन्स that how we are creating the idea of the development by giving importance to the regional
aspect of the traditional handicrafts. तो ये राधा कमल मुखर्जी की जो सोशल इकोलॉजी और वैल्यूज की बात की, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द आइडिया ऑफ राधा कमल मुखर्जी स्टिल relevant for today's society and sociology. Thank you so much for watching and listening Dhal sir classes.